We recently had the annual general meeting of Reliance Group, and one of the announcements out there was that Reliance Jio is going public next year. Uh, by first half of 2026, they plan to be public, and you know people would be able to buy stocks of the company. Now, from just pure investment point of view, I think it's a good thing to happen because investors, individual investors, small investors, were not able to participate in the telecom sector for many years now. You could, buy an existing share, but you could not go with the initial public offering. And initial public offering is always, say, relatively affordable than buying a secondary share out there. So that's something good to happen from investors' point of view. But what does it mean for the telecom? What does it mean for Geo? That's something interesting, and that's what I would want to talk about today. So पहली बात ये है कि look at how Jio has established itself. It's today not an ordinary telecom operator or not a telecom operator by that typical definition. अभी तक के टेलीकॉम ऑपरेटर्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते थे एंड उसके बाद वैल्यू बाकी लोग क्रिएट करते थे एंड दैट्स वेयर वी सॉ एक टाइम पे ओटीटी वुड कम एंड जस्ट फ्लाई बाय एंड टेक ऑल द वैल्यू. बट जियो ने एक सच में एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म खड़ा किया, चाहे वो इंडिविजुअल रेजिडेंशियल कस्टमर हो और एंटरप्राइज कस्टमर हो, सबके लिए जियो हैज समथिंग टू ऑफर एंड वेरी यूनिकली समथिंग टू ऑफर. सो आप अगर इंडिविजुअल कस्टमर की बात करें, आई थिंक जस्ट फ्रॉम कनेक्टिविटी टू कंटेंट टू सिक्योरिटी टू entertainment, you have everything. You name it and you have it, and very rich and I would say very well built. Okay, आपके पास सिर्फ कंटेंट वीडियो फॉर्मेट में नहीं है. देयर आर लॉट्स ऑफ मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स जो आप उस पे कंज्यूम कर सकते हो. दैट्स a good thing to see that Jio has done. अगर अब हम enterprises की बात करें, and again this is not specific to enterprises, this can be even used by individuals. So Jio has just introduced Jio PC. So आपका smart TV can just become your PC and you can customize, you can configure your devices. That's the beauty of virtualization. So Jio is bringing such strong feature to consumers in India for the first time. मुझे लगता है जो एक आईटी हेड या आईटी एक एग्जेक्टिव एक कंपनी का रोल करता था कुछ टाइम पहले, अब आप खुद कर सकते हो. यू कैन डिसाइड कि आपको कितना रैम चाहिए, क्या स्टोरेज चाहिए, किस लेवल का प्रोसेसिंग चाहिए. यू कैन डू ऑल ऑफ दैट. And now with AI coming into the place, it's very important that you get this kind of flexibility. I think we can right now just imagine that how facilitating is this kind of feature is going to be. उसके बाद AI की बात करते हैं. So Jio already has good collaborations in place. Meta के साथ है, Google के साथ है, those and they have recently made further announcement along with these partners. Now Meta through Facebook और WhatsApp बहुत टाइम से इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं. उनके पास बहुत रिच एंड बहुत इनॉर्मस डेटा है about the customers, about the users in India. So उससे I'm sure बहुत अच्छे AI models का आउटपुट हो सकता है एंड हो रहा है. इनफैक्ट अब देखोगे भी मेटा को आप यूज करिए AI में, यू विल गेट वेरी गुड रियलिस्टिक आउटपुट्स कंपेयर टू मेनी अदर AI एप्लीकेशंस आउट देयर. सो वो एक बहुत अच्छा इन्होंने फोरे करा है. रिसेंटली इन्होंने फिनटेक में भी अपना कुछ अनाउंसमेंट करा है दैट यू कैन फाइल योर GST थ्रू देम. And if you need some assistance, I think at 999 rupees, that also is enabled. So, they have digitized one of the, most cumbersome process, but very important compliance for everyone, for every taxpayer out there. तो ये भी बहुत अच्छा है. एंड इसके होते हुए बहुत डेटा उनके पास अब आएगा. सो दे विल बी एबल टू ऑफर अ लॉट ऑफ फिनटेक प्रोडक्ट्स बेसिस दिस. So that's again out there. Then on the technology front, they have also been, investing on building stack by themselves. So, what I'm trying to say is that Jio ने इतने साल अपने आप को एक, एक confined entity के शेप में नहीं रखा. They evolved with the time and they are today, a different Jio than what they started. हम तो उनको उस टाइम पे सिर्फ जानते थे कि वो 4G ला रहे हैं.
आज तो जियो क्या नहीं ला रहा है, आपका फाइबर होम में आ रहा है, चाहे आप वायर्ड फाइबर की बात करें या इस फाइबर टू द होम की बात करें. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू शेयर इज दैट जियो ने अपने आप को एक स्टैटिक एंटिटी नहीं बना के रखा ऑल दिस इयर्स. हम उनको जानते थे कि एक 4G मोबाइल ऑपरेटर आ रहा है, जो जो हम लाइक अर्लियर डेफिनेशंस में, अर्लियर अवतार्स में देखते आए हैं टेलीकॉम ऑपरेटर्स को. इट वाज एट दैट टाइम लुकिंग जस्ट ओके, अनदर टेलीकॉम ऑपरेटर जो 4G सर्विसेज दे रहा है मोबाइल पे. But look at where they are today, what all they have added to their ecosystem. In real sense, they have built an ecosystem, एक platform बनाया है, which is up there, ready to serve all kind of customers. और अगर मैं इनकी थोड़ी नेटवर्क रेजिलियंस की भी यहाँ पे बात करूँ, बहुत रिसेंट का एपिसोड है when we had a lot many cloud bursts and rainfall in J&K and entire northern region of the country. So there was a network blackout in J&K, and it was only Jio which still was working. I wouldn't say it was perfectly working, and neither will anyone from the Jio also claim that कि सब कुछ ठीक था. But still Jio was working, and Jio to Jio connections were up. लगते थे थोड़े मुश्किल से, but लग रहे थे. And I think it was one of the quickest to come back and restore at 100% of its capacity. तो वो resilience देखिए, and वो resilience कहाँ से आती है? I have witnessed it firsthand. I have seen how they have decided to replace their last mile, fiber connectivity cables in places like Kashmir where there is snowfall, and snowfall, has been resulting in fiber cuts since a long time. Not just fiber, any, last mile cable. And uske against, if I look at what was the approach of earlier operators, they had nothing to offer. Unki cables to aise cut jati thi during snowfall, and it was only some of the people from that department would tell us off the record कि भाई अगर आप एक मार्केट में मिलती है इन्फेंट्री केबल विच इज एसेंशियली यूज्ड बाय द पैरामिलिट्री फोर्सेस, आप भी वो मार्केट से लाइए और इट इज मच मोर ड्यूरेबल, तो वो स्नोफॉल बेयर कर पाती है. So those were the things when we would just invest out of our own pockets and get those kind of add-ons done over and above what the operator would provide back then. But look at how Jio on its own decided that हाँ ये एक inconvenience है, हमारी जो नॉर्मल केबल लगती है फाइबर की लास्ट माइल के लिए हर जगह, वो शायद इन प्लेसेस पे काम नहीं करेगी, हमें यहाँ पे कुछ नया लाना पड़ेगा. एंड दे हैव डन इट ऑन देयर ओन. One, to improve their customer experience, and to ensure that customers also need not to put in something beyond what they are paying as fee. So these are, and this has added to the resilience of the network. Now आज की डेट में अगर मुझे ऐसी प्लेस पे कहीं कनेक्शन लेना है, so I will always look into these kind of factors, and then only take a decision. So ये सब देखते हुए मुझे लगता है कि Jio has really deserved and earned to reach a stage in these many years that now it can decide and go public. And I am not a financial expert, so cannot comment on how their stocks will trade. But जो भी अभी तक उन्होंने from technology point of view करा है, मुझे लगता है उसके होते हुए तो उनके stocks definitely will be oversubscribed, and it will see a good appreciation in a very short span of time. So I am really looking forward to their IPO as an individual, as a small time investor. And I hope everyone out there would also be keenly looking out. That's what I had to share in my Tech Byte today. I'll be back with you in another Tech Byte. Till then, enjoy tech.